Good morning, friends. Let us continue our discussion. We started with the basics of FM, and yesterday we started with the first part, that was time value of money. And on time value of money, we did a few questions. Now, few more we have to do. So we did compounding and discounting for a single cash flow. It was very easy for a single cash flow. Then we understood annuity, but within annuity we have annuity regular, we have annuity immediate. So in case of annuity regular, cash flows are at the end of the period, so we compounded it. It was compounding factor -1 divided by R, which was future value annuity factor. What is the present value annuity factor? 1 minus discounting factor divided by R. But remember, present value of annuity formula does not give you answer as on today. It gives you answer at the beginning of the period in which annuity started. So you have to make an adjustment to it. And in case of annuity immediate, I said cash flows will take place at the beginning of the period. So you have interest for one more period. So we multiply by 1 plus R. Then we talked about a perpetuity, which is a constant perpetuity and growing perpetuity. Constant perpetuity, periodic amount divided by interest rate will give you present value. Growing perpetuity, now this is important. This is going to help us in calculation of terminal value of a share. कोई भी शेयर का जब आप DCF वैल्यूएशन कर रहे हो या बिजनेस का DCF वैल्यूएशन कर रहे हो, you cannot make an estimate forever. आज के 15 साल के बाद आपका इनकम क्या होगा, नहीं एस्टिमेट करते हो, मुश्किल है. नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 5,000 पर मंथ, मालूम है. So making estimate for the next year or next to next year, or even let's say in the initial years of becoming a CA, is quite easily possible for you. But 10 साल 15 साल के बाद आप कहां पे जाओगे, आपके ऊपर है. तो हम क्या अज्यूम करते हैं, टर्मिनल ग्रोथ रेट. ऐसे बिजनेस के केस में दिस लॉजिक वर्क्स फॉर अ मैच्योर्ड बिजनेसेस. प्लीज रिमेंबर व्हाट वैल्यूएशन आई एक्सप्लेन टू यू yesterday with the one question cannot be applied for startups or a little grown up startups like Zomato or Nykaa, or I will not call Paytm as a startup. It is nearing its end game only. But you cannot apply such models to Zomato because वहां पर exponential growth का जो phase है वो अभी तक खत्म हुआ ही नहीं है. So you can apply these models, two-stage model. See, अगले कुछ साल का इतना growth होगा और thereafter growth will be so and so. You can apply them for companies which have matured substantially in terms of their business. बहुत सारे साल हो चुके, तो वहां पर आप ये थोड़ा easily कर सकते हो. बाकी केसेस में अगर आप कर रहे हो तो वो बेसिकली क्या होता है ना, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट देने के लिए करते हैं. बट चलो ठीक है. ग्रोइंग परपेचुटी, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोइंग परपेचुटी का ग्रोथ रेट आएगा कहां से, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी. So return on equity was earnings available to equity shareholder divided by equity share capital plus reserves and surplus. It is with reference to book value of shares. Earnings yield is with reference to market price of a share. Earnings yield and ROE, yes, they are linked with each other. Earnings yield multiplied by price to book value ratio will give you what? Return on equity, ROE. Let's go ahead to the last formula on time value of money. Effective annual rate. There are so many situations where compounding doesn't happen on a yearly basis. For example, majority of the bonds issued by Government of India, interest is paid out on a half yearly basis. There is no compounding, there is an interest paid out. But imagine interest का पेमेंट नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे होगा लेकिन वो कंपाउंड होगा, री इन्वेस्ट होगा. देयर इज अ बॉन्ड विच इज पेइंग यू कूपन. इंटरेस्ट के जगह पे मैं फैंसी वर्ड यूज कर रहा हूं. बॉन्ड इज पेइंग यू व्हाट, कूपन. ऑन व्हाट बेसिस,
semi-annual basis, and those coupons are reinvested. And you want to calculate what is your effective annual rate of return. So you can use this formula. For example, bond is giving you 13% per annum. क्या दे रहा है bond? 13% per annum is what is given by bond, but compounded quarterly. Compounded quarterly. CQ. Understood? Compounded quarterly. So per annum ये rate of interest है, लेकिन compounding quarterly हो रहा है. तो what is the effective rate of return on an annual basis? If I want to calculate that, how would I get it? EAR, effective annual rate, is equal to 1 plus R. R is the annual rate, 0.13, divided by M. M is what? Number of times you do compounding in 1 year. So that is 4 times compounding that I am doing in a year, raised to what? 4. Bachcho, please note that number of years for which you have invested the money is not relevant when you calculate EAR. तो EAR का जगह पे मैं आगे जाके बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला बॉन्ड वैल्यूएशन में. It is nothing but EAR. You are going to require this time value of money chapter and ratio analysis chapter a lot for the and cost of capital, a lot for the purpose of first big 4 large caps chapter, that is valuation. वैल्यूएशन का टाइम पे बहुत काम में आने वाला है. तो बोलो ये कितना था आंसर? विल बी द आंसर 13.64%. अब इसका मतलब क्या है 13.64 का? What does a 13.64 mean to you? 13% per annum compounded quarterly is same as 13.64% per annum compounded annually. दोनों का मतलब सेम है. So यहाँ पर N, the number of years for which you have invested the money, is not relevant. What is relevant? Number of times you are doing compounding in 1 year, that is relevant. बाकी और कुछ भी relevant नहीं है. Are you clear with the formula of EAR? So I have given some fundas. You should be able to calculate net present value of inflows minus present value of outflows. But the important question is, when you calculate this present value, what is going to be the discount rate? Whenever you work out a NPV of a project, नेट प्रेजेंट वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो किसी प्रोजेक्ट का, याद करो कैपिटल बजटिंग नाम का एक चैप्टर था, तो वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट क्या होता है? क्या इंटर क्या गोटा माले गए तुम लोग? हाँ, कैश फ्लोज. व्हाट इज द डिस्काउंट रेट? आंसर इज कैश फ्लोज. मैंने पूछा डिस्काउंट रेट क्या होगा? Expected rate of return. You should take a weighted average cost of capital duly adjusted for risk. उसको बोलते थे, भूल गए तुम लोग, RADR, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट. नहीं है कैश फ्लोज. कोई तो टैक्स रेट बोल रहा था उसके पहले, है ना? टैक्स रेट कर रहा था कोई तो. Discount rate should be, while calculating the NPV, discount rate which you gonna consider should be equal to risk adjusted discount rate. हाँ, वैक जो होता है उसमें you might not have adjusted risk. कुछ प्रोजेक्ट रिस्की ज्यादा हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट कम रिस्की हो सकता है. और बोले किधर था सर? इंटरमीडिएट में एक चैप्टर था, याद होगा नाम तो उसका, रिस्क एनालिसिस. उस चैप्टर के अंदर आता था ये. रिमेंबर, रिस्क एनालिसिस नाम का चैप्टर याद है क्या? So in that chapter you would have done this particular concept of what? Of RADR. तो जब आप NPV निकालते हो, you are going to consider risk adjusted discount rate, not just the WACC. What does the NPV tell you? NPV tells you addition. It's like a EVA in present value terms. अब बोले ये क्या हुआ सर?
ईवा क्या बोला था मैंने कल एक्सप्लेन किया था ईवा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स minus cost of capital employed. So how much extra have you earned over and above cost of capital? NPV भी वही है. It is how much extra are you earning over and above expectations of investors, which is a cost of capital. तो RADR आपको यूज करना है. RADR से RADR is going to be based on cost of capital only. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट वाज WACC प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क. कोई एक कंपनी है लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस ने एक ड्रग स्टोर का चेन खरीद लिया बूट्स. अगर आपको याद होगा आपने गलती से अगर आप हेडलाइंस वगैरह पढ़ते होगे या अंदर पढ़ा होगा तो अबाउट $6.8 billion दे स्पेंट ऑन बाइंग बूट्स in tie-up with some more entity. It's not the RIL has bought it entirely. There's other partners also. So Reliance has brought a drugstore chain, that too in UK. Now Reliance Retail so far has good experience or good expertise in India. For them, UK is altogether new market. So they are basically trying to become a Walmart, which is good enough. But risk premium which Reliance should assign to opening new stores in India and risk premium to open drugstore chain, drugs in terms of medicines, in UK is different. In UK, the entire drug business or the medicines business is handled largely through the government. बिकॉज वहां पर लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होता है. अपने यहाँ पे मेडिकल में जाकर तुम खुद खरीदते हो. सो कस्टमर ओनली पेज. देयर द प्राइसिंग इज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, रूल्स. अपने यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं है. तुमने कभी मेडिसिन के लिए तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिला? नहीं. तुम हाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तभी हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन लगते हैं वही इंक्लूडेड रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में. तो risk premium which I am going to assign to a project is going to vary. मैं क्या बात कर रहा हूं, एनपीवी जो हम निकालते हैं वो क्या है? Excess over the expectations of investors, but in present value terms. EVA क्या था? EVA was calculated not for the entire project. EVA was calculated economic value added. सिलेबस में है फाइनल के. तो ईवा हम ईयर बाय ईयर निकालते हैं. इस साल का ईवा इतना है, इस साल का ईवा इतना है, इस साल का ईवा इतना है. आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ योर कंपनीज व्हिच यू ऑडिट फॉर हैज कैलकुलेटेड ईवा. आई विल शो यू सम रिपोर्ट्स ऑफ ईवा दैट टाइम. ईवा ईयर बाय ईयर कंप्यूटेशन ऑफ द एनपीवी इज टेलिंग यू ऑन entire life of the project we are earning this much over and above expectations of investors. That is net present value. If we know the cash flows and the timing of the cash flows, then we can calculate IRR, which is nothing but a trial and error approach. IRR is such a discount rate at which net present value is 0. Please remember, cash flows can be either investment situation or a borrowing situation. What happens in an investment situation? There are outflows first, followed by inflows. And in a borrowing situation, there are inflows first, followed by outflow. तो borrowing situation हमें कब काम में आने वाला है? When we are going to calculate cost of capital. या IRR आपको निकालना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. म्यूचुअल फंड के चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. रिटर्न अर्न बाय पोर्टफोलियो मैनेजर एंड रिटर्न अर्न बाय अ इन्वेस्टर. दे आर डिफरेंट. क्यों? पोर्टफोलियो मैनेजर का जब आपको म्यूचुअल फंड समझता होगा, फंड मैनेजर समझता होगा, पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर. थैंक यू. तो फंड मैनेजर जो होता है, हिज परफॉर्मेंस might get affected by inflows and outflows decided by investor which are out of his control. For example, right now market गिर गया है. फंड मैनेजर को लगता है दिस इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट, ये शॉर्ट टर्म है और हमने इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे स्टॉक्स के अंदर, हमारे स्टॉक्स अच्छे हैं. ऐसा मैं फंड मैनेजर हूं, मुझे लग रहा है, और तुम लोग इन्वेस्टर हो, तुमको लगता है अरे यार क्या यार मेरा स्टाइपेंड जा रहा है. यू पुट अप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट. Investors put what? Redemption request for a mutual fund investments. But fund manager is obliged to obey the instructions. As a fund manager, do I have choice? मेरे पास choice है क्या? नहीं ना. तो
इन्वेस्टर्स कब पैसा डालेंगे? जब मार्केट टॉप पे था अक्टूबर 2021 में इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे, फंड मैनेजर को लगता है कि अभी पैसा नहीं डालना चाहिए मार्केट के अंदर क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, तभी भी लोग पैसा डालते हैं। तो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस आपको सेग्रीगेट करना है और इन्वेस्टर्स का परफॉर्मेंस सेग्रीगेट करना है, उस टाइम पे ये आईआरआर का कैलकुलेशन लगने वाला है। वी आर गोना टॉक अबाउट डिफरेंसेस इन रिटर्न टू अ फंड मैनेजर एंड टू अ इन्वेस्टर। तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट सिचुएशन या बोरिंग सिचुएशन है। आई होप यू रिमेंबर दिस वाज देयर इन इंटरमीडिएट। इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में जब आप डिस्काउंट रेट इंक्रीज करते हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होता है, और डिस्काउंट रेट अगर आप डिक्रीज करते हो तो एनपीवी इंक्रीज होता है। दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप इन केस ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड अ net present value. Relationship is inverse. For a borrowing situation, relationship is positive. Discount rate बढ़ गया, NPV भी बढ़ जाएगा. So you should remember while calculating internal rate of return, IRR आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये आपको बहुत बार लगने वाला है FM के अंदर, SFM, FR में तो पूछो मत, पूरा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के लिए आपको बहुत सारी जगह पे आपको आईआरआर यूज करना पड़ेगा। इम्प्लीसिट रेट लीज अकाउंटिंग के लिए यूज करना पड़ेगा, या आपने अगर लीज का अकाउंटिंग इंप्लीमेंट किया होगा कहीं पे तो आर्टिकलशिप में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज बेसिकली, और प्रेजेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। ये बेसिकली मैं बोल रहा हूं डीसीएफ अप्रोच। डीसीएफ अप्रोच है ये। अंडर डीसीएफ fair price is a present value of future cash flows. Cash flows and fair price have positive relationship. If cash flows go up, price goes up. Cash flows comes down, price comes down depending on news flows. Discount rate and fair price have inverse relationship. Right now, जो भी stocks में decline हो रहा है, it is not completely due to earnings. चलो कॉस्ट बढ़ चुके हैं बहुत सारे कंपनीज के, इनपुट कॉस्ट की वजह से, लेकिन उनके प्रॉफिट पे उतना इंपैक्ट नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आई एम लेट्स से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो सेमीकंडक्टर के जो चिप्स लगते हैं वो कॉस्ट उसका बढ़ गया है मेरे को, बट उसका इंपैक्ट मेरे प्रॉफिट पे उतना नहीं आता है क्योंकि आई कैन पास ऑन इंक्रीज इन कॉस्ट। इन मेनी केसेस इन्फ्लेशन इन योर मटेरियल कॉस्ट और इनपुट्स कैन बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। अभी जो मार्केट गिर रहा है वो प्राइमरली इस चीज की वजह से गिर रहा है। डिस्काउंट रेट विच इज कंसिडर्ड हैज गॉन अप। क्यों? इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहां पे आरबीआई, यूनाइटेड स्टेट्स में फेड, उन्होंने क्या करना चालू किया? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना चालू किया। मार्केट हैज ऑलरेडी एंटीसिपेटेड दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप चेक करोगे मार्केट के अंदर जो YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, इट इज मच हायर देन रेपो रेट। रेपो रेट हमारा जो है और जो YTM है शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स का भी आप देखोगे, क्योंकि रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का जो रेट चल रहा है मार्केट के अंदर वो ऑलरेडी ज्यादा जा चुका है, क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला। दो बाइडन थिंक्स दैट इट इज ट्रांजिटरी, मार्केट इज नॉट थिंकिंग ट्रांजिटरी, मार्केट इज थिंकिंग दैट बाइडन इज ट्रांजिटरी। So, in my opinion, Biden won't get any more term. Physically also. Ceteris paribus, discount rate and what? Fair value have what? Inverse relationship with each other. So, if discount rate is going up, the valuations of the various stocks are coming down. Risk attached to investment and expected rate of return have positive relation. अगर रिस्क बढ़ गया तो डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, डिस्काउंट रेट बढ़ गया तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो वी कैन यूज दिस फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर, बॉन्ड वैल्यूएशन, फेयर प्राइसिंग ऑफ असेट, बिजनेस वैल्यूएशन, ये सब कुछ हमें काम आने वाला है वैल्यूएशन चैप्टर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट जो हो ना वो कैश फ्लोज कैसे ले। शुड वी टेक अ कैश फ्लो फॉर इक्विटी होल्डर्स और शुड वी टेक अ कैश फ्लो फॉर द फर्म एज अ होल? प्लीज रिमेंबर, मैंने कल आपको कैश फ्लोज का 2 एंगल बोला था, याद होगा तुमको? तो इधर है, याद है क्या तुमको? क्या लिखा था? कैश फ्लोज कैन बी नॉमिनल, कैश फ्लोज कैन बी रियल। इन द सेम वे कैश फ्लोज कैन बी फॉर
equity investors, cash flows can be for the firm as a whole. Depending on a cash flows, you must use appropriate discount rate. वैल्यूएशन करने के लिए मेथड जो होता है वो आसान होता है, बट उस मेथड के लिए जो इनपुट्स चाहिए होते हैं ना, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. और ये 18 से 20 मार्क को आएगा आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. प्लस आप डिग्री लेने के बाद 3 साल के बाद आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो. आई आस्क यू पीपल टू चेक वेदर यूर पार्टनर इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में रहेंगे, कोई आपके फॉर्म में कोई तो एक आधा तो पार्टनर रहेगा जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है. चेक किया तुमने रजिस्टर्ड वैल्यूअर? आरवीओ का एग्जाम रहता है, उसका रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन है. सो गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ हैविंग अ separate institute for that valuation. Right now it is controlled to a large extent by CA members. गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट तो पूरा सीएस के अगेंस्ट है, नो डाउट अबाउट इट. So better these people start saying Nirmala madam is great. So cash flows and discount rate must be matching with each other. अगर मेरे cash flows जो है वो इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, तो डिस्काउंट रेट के होना चाहिए. सो उसको बोलते हैं कैश फ्लोज को हम बोलते हैं, आगे जाके मैं सिखाऊंगा, अभी नहीं. प्री कैश फ्लो टू इक्विटी. क्या बोला मैंने? FCFE. अगर मैंने FCFE लिया तो डिस्काउंटिंग मस्ट बी एट KE. व्हाट इज KE? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हाँ, अब वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस्टिमेट कैसे करना है उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस है, करेंगे आगे जाके है. अगर आप FCFF लेते हो, व्हाट इज FCFF? प्री कैश फ्लो टू द फर्म, you must do the discounting at, बोलो, discounting at KO, overall cost of capital और WACC. अब ये करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एंटरप्राइज वैल्यू, पूरे धंधे की वैल्यू. एंटरप्राइज वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ डेट. और ये करके आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी. ये दोनों अप्रोचेस से जो आंसर आएगा वो मैच नहीं होता है, क्योंकि लिवरेज का इंपैक्ट आता है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. यहां पर इक्विटी के कैश फ्लोज लिए मैंने, यहां पर मैंने फ्री कैश फ्लोज लिए. ये डिटेल में मैं वैल्यूएशन में एक्सप्लेन करूंगा. मैं सिर्फ एक लिंक क्रिएट कर रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपने सीखा था वो बहुत काम की चीज है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं इस चीज को. तो कैश फ्लोज मैचिंग होने चाहिए, वो याद रखना. यही तो मैंने लिखा था. सो कैश फ्लो शुड बी ऑन नेट बेसिस, दैट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, स्पेशली व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट फॉर इक्विटी. FCFF फर्म के कैश फ्लो जो भी होंगे वो भी आपके टैक्स के पेमेंट के बाद होने चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंट रेट that you consider for valuation and a net present value is not linear. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत करना. बच्चा क्या करता है? एट 10% NPV is equal to so and so, let's say 43,000. At 13% how much is NPV? बच्चा क्वेश्चन मार्क करता है, ऐसे करता है, इतना मारूंगा ना. This is not a linear relationship, it is asymmetrical, so do not use cross multiplication. So if expected rate of return which investor expects goes up, which is the situation right now in the markets में क्या है? रिस्क एवर्जन हो रहा है. If you see Japanese yen has hit the almost 30-year low, it's lifetime low. Japanese yen is crashing. It's one of the major economies which is क्यों? There is a lot of risk aversion and money is flowing to safe haven, that is US dollar. US dollar is a reserve currency, अगर आपको ये कुछ याद होगा इकोनॉमिक्स. तो US dollar is a safe haven. There is a risk aversion that is taking place in the market. From risky assets, money is going to what? Safe assets. Dollar मतलब dollar denominated bonds. So those bonds are right now in US, long-term bonds are yielding about 3%, 3.2% somewhere. So as expected rate of return goes up, the amount which an investor is willing to invest comes down and vice versa. We understood that. तो कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स दिए, कंपाउंडिंग फैक्टर के लिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए है,
फिर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, याद रखने की जरूरत नहीं, आई होप यू नो दैट। ऑड रूट कैलकुलेशन बहुत बार लगने वाला है, तो आई होप यू रिमेंबर। आपका कैलकुलेटर जो है वो सेकंड, फोर्थ, एट, 10th रूट ही देता है। इफ यू वांट फिफ्थ रूट, कैलकुलेटर डजंट गिव यू आंसर, तो यू शुड रिमेंबर 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, याद है? देन -1, then divide by the required root, that is a fifth root, then add 1 and then press into and is equal to button 12 times. Into is equal to is 1 time. In case you want a power, odd power, 5 raised to 2.1, then you need to multiply by the required power instead of division. यहां पर जो divide by किया था ना मैंने, divide by की जगह पे आपको multiply by करना होगा। I hope you know that. प्लस वो लॉग का वैल्यू भी नोट करके रखना, कहीं पे ज्यादा लगेगा नहीं। लॉग टेबल नॉर्मली इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स लॉग वैल्यूज इन द क्वेश्चन, क्योंकि हमें जब बाय व्हेन वी आर गोइंग टू डू डेरिवेटिव्स, ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल, वी आर गोइंग टू रिक्वायर लॉगरिथम। नॉर्मली इन द क्वेश्चन दे गिव द लॉग, बट आपको याद होगा तो आपने 15 टाइम्स स्क्वायर रूट किया था, -1 देन डिवाइड बाय द एक नंबर था वो 0.71, वो नंबर मैं आपको लिख के दूंगा उस टाइम पे, तो वो भी कैलकुलेशन आएगा। when you require a log, normally इंस्टीट्यूट प्रिंट करता है, ब्लैक एंड स्कोल्स के लिए लॉग लगता है, तो नहीं दिया तो आपको याद रखना चाहिए। So anyone has a doubt on any question or any point on time value of money? Time value of money doubt? Any concept that we discuss, not just the formula है, मतलब application point of view. Nobody has a doubt? So let me go to the next capsule then.